Namaskar. Good morning. Suraj Singh, Civil Engineer, Faridabad, Bharat, International Professional Engineer. Ready to talk to you about general election status 2019 Lok Sabha as is being conducted in this country, Bharat. Six phases have been over almost this election 2019 for selecting and appointing 545 or else member of parliaments to Lok Sabha for a period of 5 years are over. It's it's not an easy election. It's not a common election. It has not been an easy election in sense of generality of elections. Our country, Bharat, India, has witnessed many elections which are called general elections in status of midterm poll or regular poll. This is election of Lok Sabha members of parliament for 2019 to 2024, a regular election but a difficult and specific election. This election, which people might have not understood very well, sets forthwith a definite future in a democratic way, in a secular way of our republic. It has to decide future of our country, future of 1.3 billion people residing in this country who are collectively king of this country. We people of this country, Bharat, India, 130 crore population, are collectively, statutorily called owners of this country, Bharat. We are above politicians, we are above political heads, we are above all titles. We constitute our nation, Bharat, and we salute this nation, our flag, and mother of this country, Bharat Mata, and Jai Bharat. We are having highest degree of pride to be named, to be entitled Bharat resident citizen of Bharat, India, and I have full pride in that. I feel that I belong to this country and therefore I belong to whole world. Bharat had been a leader in history, and the Bharat name is not so simple as it's called now. If you go to history, Bharat means whole world at one time. Krishna used to say, Ram used to say, Yada yada hi dharmasya galanir bhavati Bharat. Fortunately, we could not understand this, and all others could also not understand this. Bhagwan Krishna and Bhagwan Ram would not come here to solve problems of a small country is as ours, but they would have come, or they must have come to solve problems encompassing whole world, and therefore whole world could be called Bharat at that time. Well, no use to go back to that period. Just for reference, I spoke this because I feel pride in calling myself belonger to Bharat, India, and mind it, seriously I am talking that I don't belong to Hindustan because there is no Hindustan on the earth now and before since 1947. We were never Hindustan in between 47 to now. Hindustan name is rubbish. It is the foolishness of our people who call themselves Hindustan. Anyone whosoever belonging to this country, if calls Hindustan, he is not having mind
to read constitution of our country. In constitution of our country, in article 1, where name of this country is defined, it is Bharat and India, and nowhere in whole constitution document is defined or named or entitled Hindustan. That is the reason I criticize all those, irrespective to belonging to whatever highest political caliber, does not understand meaning of this country, name meaning of this country, and they don't understand what country is. They are maybe prime minister, maybe president, or whatsoever it be. Our passport says Republic of India, the Bharat Ganarajya. It never says it is Hindustan, but we people are foolish. We don't understand what we are talking. My name is my name, and that is all. I am Bharat, I am India. I don't even prefer India, but fortunately or unfortunately, this is our name for time being. It can be taken out in future. We don't want to be named Hindustan because this is insult to ourselves, insult to India, insult to Bharat, insult to national honor, insult to name of one nation. Well, I will like to ask those leaders, maybe Congress, maybe BJP, or maybe whosoever else, please read constitution of this country before talking foolishness. If you call Hindustan, you abuse yourself and you insult 130 crore people of this country, and that is unfortunate. I ask Rahul Gandhi many times. I have written on his videos as comments, please stop calling Hindustan, but this boy does not understand, and similarly our honorable PM also does not understand, and many other spokesmen are also uneducated to an extent this issue is concerned, because they never understand our culture of reading books has gone. We are only talkative society. We don't respect ourselves, we don't respect our names, we don't respect our culture, but we call Bharat Mata ki Jai, and we never call Hindustan ki Jai, but they use term Hindustan every time, and that is why I criticize them. They can't understand after many criticism what to do with such donkey people. I don't know, I am using this term donkey because they deserve to be called donkey. Even I many times have written to all of them. They don't try to read this. They cannot open page of Constitution of India. Article 1 itself says that if they don't have time to read Constitution of India, first page itself, I don't know how can they build this country, how can they support this country, as they claim that they are leaders of this country. If they are leaders of this country, they have to do their duty. They have to realize themselves they are leaders, and they have to lead public, but they are not leading themselves even to an extent name is concerned. And this is really, I'm very regretful. I'm regretful at this point of view, because name is the honor of this country. I am Bharatvasi, I am Indian. First preference is I will call myself Bharatvasi, because Bharat is my name. Yada yada hi dharmasya galanir bhavati Bharat. Krishna said this. Bharat is there and dharmasya is there. There is no Hindu dharmasya. He never said yada yada hi Hindu dharmasya. No, he did not say that. Yada yada hi dharmasya. Dharam. Whenever there is a loss to human, there is a defect in dharmasya, in dharam. Dharam, never Hindu dharam said. No Indian dharam, no Muslim dharam, no Sikh dharam, nothing. Just say yada yada hi dharmasya. Negativism, dharm, negativism to rightness. Dharam means right, and adharm means wrong. Simple. Whatever is right is dharma. Whatever is not right is adharma. This definition. And galanir bhavati Bharat. Bhavati Bharat. Bhavati, highest regard of title of a female title, Bhavati, Devi. Bhagavan Bhavati. Devi Bharat. Bharat is a Devi. It's a great honor. Bharat is not a simply land, it's a group of people. Now it is 130 crores of people. They themselves constitute Bharat. Bharat in status of godliness, not only manliness or womanliness. We are having a status like God. Means Jan Gan Man Adhinayak Jaya Bharat Bhagya Vidata. Jan Gan Man, we all meaning of this. Jan Gan Gan and all we know this. But there is a Bharat Bhagya Vidata. What does that mean? Bharat Bhagya Vidata. Bharat Bhagya is luck, Vidata is God. Bharat public itself is responsible to decide its destiny. We people of Bharat ourselves decide our destiny, and that is
Bharat Bhagya Vidhata. That is clear meaning of this. It is not political leaders, it is not a prime minister, it is not president, it is not court, it is not someone else. It is common people of this country who decide destiny, generality, practicality, totality, and everything for their future. They are responsible. And that brings a right to each and every citizen of 18 years and above to exercise right of franchise or right of suffrage to elect respective nomination, not nomination, respective candidates for post of member of Parliament Lok Sabha. It is given in our Constitution of India that as citizen of this country, as voter of this country, I have constitutional right. Every citizen has got constitutional right to elect respective member of parliament from respective constituency where one resides. And currently there are 545 or something like that. I don't exactly know number. But these respective member of parliaments from respective constituencies of this country constitute Lok Sabha, and this is highest formal house based on a direct democratic election to lead nation. These people are real lawmakers of this country, and they make laws on behalf of 130 crore people or whatever number of people reside in this country at whatever time. This time we had to elect again this house known as Lok Sabha, a part of parliament. Two more parts are there. One is Rajya Sabha and one is institution of president, Rashtrapati. President, Lok Sabha and Rajya Sabha, these three bodies collectively run this country in position of legislature, executive, and an independent judiciary, not under these two bodies, but independently, absolutely. Elections are running. Of course, these are running. 2019, of course, a difficult year for public to decide because last election was conducted in 2014 in certain goal which has never been achieved yet was defined. In 2014, Bharatiya Janata Party, which is in power now, had issued a document known as Manifesto of BJP, authorized by Dr. Modi, who is now Prime Minister of this country, and Dr. Joshi, who was leading that manifesto constitution that time. And if you go through that constitution of manifesto, you shall find they were made skies of promises. But these were just computerized, composed, very well issued, publicized, put on website, and thereafter having been elected to power, having been elected to a majority power in Lok Sabha, this manifesto was put in cold storage forever. Unfortunately, this manifesto means like just issue a document, and they know people shall not read this document, and they understand very well our mentality, public mentality, culture of not reading any document nowadays is really a setback to our society as a whole. What I have to say that we people, maybe we are educated, 50% of us are very well educated, but we have no time to read any such significant document that tells us what this party would do. And that Honorable Prime Minister must be having no time to read that document once again after it has been published, and all those belonging to BJP party and all those belonging to Congress party and all those belonging to public members, they never just think to read that document, and that is really unfortunate. We are documenting country just to have document, approve it and put it in your shelf forever so that dust settles on this. Really unfortunate.
We call ourselves knowledge society, but we are really knowledge-less society. We have no artificial intelligence. We are a society which never believe in brain, which never believe in thinking, which never awake. We awake only for our jobs. We awake only to make money, to live, to eat, to drink, and to enjoy life. 2000 election, 2019 election is a hammer on our heads. Our prime minister has only one key, one issue, that he wants to consolidate his power for second term, whereas other counterpart, Congress, it is also on equal pattern, that it is done nothing in the last 5 years. It has done nothing, though it was in opposition, lead opposition, but it never did anything for public of this country. 5 year period is a very great period for any engineering degree or medical degree or any other degree or whatever it is, that you can do that. But this party could not even contribute to our public with one document that must tell public that there is a vision with Congress for coming 5 decades or 4 decades or 3 decades, just like nowadays other countries like Kingdom of Saudi Arabia is doing, like United Arab Emirates is doing, like Oman is doing, and like many other countries have been busy with, to constitute certain documents, so that documents help public, that document is self-explanatory, and that ruler, that government, the government, so-called government, public government or self-government, must follow that document. But in our country, this is really taken for granted, because our country culture has changed. 25% of people think that we should be ruled by Hindu or we should rule by Muslims. Unfortunately, this is a secular country, and this point has come. There are some people who are called devotees to Dr. Modi, Honorable Prime Minister. I am calling devotees because general name of those people nowadays is Bhats, Modi Bhats, general term. Those people who blindly believe in Dr. Modi, they have eyes, they have nose, they have brain, they have everything, but they don't use those. They all lock those in bank locker, and they think Modi, 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 Modi. When they sleep, call Modi, Modi. When they awake, call Modi, Modi. When they eat, call Modi, Modi. When they go to WC, they call Modi, Modi. You do speak anything, you do ask any question, they will say Modi, Modi. They will answer Modi, Modi. You raise any economical question, they will say Modi, Modi. You raise any defense question, they will say Modi, Modi. You ask them any farmers question, they will say Modi, Modi. You ask them anything from A to Z or 1 to 100, they will simply answer Modi, 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 Modi. This is our intellectual class of 10 to 25% public. And I talk to many people of this country, grown people, middle class people, middle-aged people, senior people, those who have such mind of Modi, Modi, they would simply say, oh, we don't want to get Mughal rules here or Muslim rules here. If Dr. Modi goes, Muslims will come and rule us. This is a mentality, stupidity, and whatever we can say, that we have been doing these elections since 1950, and this is a democratic country, this is a secularist country, we are a socialist country, we are a country constituted by all people of society, all sections of society, and constitution is clearly mandated by we people of this country. We people of this country, Bharat, India, give to ourselves this constitution, constitute this constitution, enact this constitution, adopt this constitution for economical justice, social justice, all justice. Means whatever is there in preambles of this constitution, that this structure of constitution has been designed based on those preambles, and this has to follow these preambles, or every institution has to follow these preambles. We have to follow what constitution says. Our ruling document is Constitution of Bharat and nothing else. Prime Minister is not ruler, President is not ruler, Election Commissioner is not ruler, no political leader is ruler. Everybody is governed by this Constitution of Bharat, India. This we have to understand very well. Those politicians who don't know this constitution, they should be thrown out from parliament, they should be thrown out from wherever they were. Unfortunately, these people don't know what is Constitution of India. Our educated society don't know what is Constitution of India. If you ask any graduate, any postgraduate, any person who is a qualified one, educated one, and I am sure 98% shall not tell or shall not know what Constitution of Bharat is. Unfortunate it is. I really hate this kind of knowledge they don't have. What for you go to college? What for you go to university? What for you call that your PhD? Why you call your postgraduate, your graduate, when you cannot even understand, wonder what law this country is governed?
Maybe some law students know, some other students know, some CA students know. Only 2-3% people know about under which law we are governed. That is Constitution of Bharat, and we don't know our people sacrificed in the freedom struggle. Lakhs of people died, lakhs of people laid their sacrifices, and we don't know what Constitution of this country is, how this country is ruled, and this has happened in this country. Unfortunately, we are sleeping society. I use this word these days. I have two words these days. One is we are a sleeping society, and other word is we are a non-serious society. We are a non-serious institutions. We are a non-serious caliber. We don't take anything seriously, and that is what I am saying. We are non-serious and we are sleeping people. This is what has happened in this election. We are sleeping people and we are non-serious people, and this is what election has proved. I am going to explain to you sorry, why I am calling that we are sleeping people, we are non-serious people. What does election mean? Let us see. If you go through Constitution of India, or forget it for time being, if you go for election, what we are going to elect? As a voter, you are a voter, I am a voter, everyone is a voter. A person of 18 years age or above, according to amendment done by Rajiv Gandhi, past PM. Before it was 21 years of age, and he contributed to people that they should be 18 years and above. So he did something better for society. To an extent, this is considered. This point was one he added, and another point was commissioning of Panchayat Raj institutions, which he did. 2 points for public service he did at that time when he amended constitution. So this was one, you can say, gift to those who had age of 18 years to 21 years, and 21 years had previously also voting power or right of franchise or right of suffrage. Our constitution allows every person having 18 years of age or above, having sound mind, to have a right to vote, which is called franchise right, right of franchise, or right of suffrage. We enjoy this right. A person of 18 years, of course, not very mature, adolescent age you can say, but it's that much good to understand what vote means that age. That I know that person may not be a graduate even while voting, but why is voting or why she is voting can be understood. But they have not understood yet. Unfortunately, whatever I see on videos, on TVs, even these journalists, these reporters, these analysts, these politicians, those so-called experts, they don't understand what does vote mean. What we are going to vote for. Are we going to vote for to elect a government, or we are going to vote to elect an MP, or we are going to elect to vote for what? We don't understand very well. Constitution nowhere in all its articles mandates that we have to elect government of this country. Nowhere. I have gone through complete constitution. You can read to yourself. No article mandates that people of this country have to elect government of this country. No. Nowhere it says that we have to elect prime minister of this country. No. We have no power as such. We have no power to elect government. We have no power to elect prime minister. We have no power to elect ministers. And we have no power to elect president. We have no power to elect vice president. We have no power to elect speaker of any house or chairman of Sabha. We have no power at all to elect any such person or institution or seat of power. What we have been left with to elect is Sansad Lok Sabha, member of parliament Lok Sabha, which is a significant, very significant position, the topmost profile of this country, in this country, that rules this country. If we just analyze that, any judge can analyze, every judge can analyze, every lawyer can analyze, every expert can analyze, every reporter can analyze, every journalist can analyze, every student can analyze, but no one analyzes it. Public is misled by our honorable PM, by opposition leaders. Both have misled this country in that way. Our honorable PM says, you elect me, and others say, you elect us. These people
Though I know they know Constitution, many of them know Constitution, but they will not say that. Support me, Dr. Modi says, second time, and Congress says, remove him and support us. Nobody says elect our MPs. No one says that. Such a misleading status by these politicians must be condemned. I hate such attitude. Why don't you have courage to speak truth? I know everybody cannot read constitution document. People don't have that much time or they are not interested in, but whatever information they must have should be supplied to them. We are paying government, we are paying nation for this service. Election Commission is there, a big unit, a big power, constitutional power. It's not a statutory power. It's an autonomous body. It's not reporting to Prime Minister or reporting to someone else. It is directly reporting to public through President of India, President of Bharat. But that is only by name President. Actually, Election Commission as an institution is like a president of this country to an extent. Elections to Lok Sabha, Rajya Sabha and state assemblies and president of this country are concerned. It is duty of Election Commission to tell facts to public, to educate public, and public must know what is required by public for such elections. But public does not know. It is fault of Election Commission. Election Commission should act as an educator to public using media, using newspapers, using whatever source of transmission of this information is, but it does not. I got certain slips for my vote through Election Commission that this is your number, you go there, vote. This was invitation, okay. But it didn't give me a list that should tell me these candidates are on the list in your constituency. They may be 10, they may be 20, they may be whatever number. How shall I know who is contesting election? My question comes to you. As a voter, I must know who are there on list as candidates. If I don't know that, how shall I vote? Why do you expect that I should vote either Congress or BJP or someone else? Am I their slave? Am I bound by some agreement that I have to elect either of these two or three? Am I born in Bharat on earth just to vote for them? I have no personal opinion, personal choice. I have no right to elect or select. I am bound by your symbols that vote this or vote that or go. I have full right, legal right, constitutional right to know what, who and who are candidates in and from my constituency of Lok Sabha area. Otherwise, how can I decide to whom to vote? It is whose duty it is. My question, very big question is, who is responsible for this? If candidate does not come to me, or if he comes to me and I'm not available at my home, how shall that candidate know that this person is my voter? Or how shall I know that that candidate is my person to be designated as member of parliament after being elected? How shall I know? This is a procedural fault. You are inviting me to vote on a particular day, but you are not telling me out of whom you have to vote. This means you are not doing national service, you are not doing your job, government is not doing its job, institutions are not doing their job. They just want to leave you on doldrum, do whatever. I have to go everywhere and see who are candidates. How can I know that? When you tell me this is a list of candidates, there are 15 candidates or 50 candidates, elect one of them and that is it. I want to elect non-party candidate, it's my problem. How shall I know who's there? I cannot know. And this time particularly happened in this election. I did not find even names of political parties candidates. I did not see. I was just walking on the road. There were some auto rickshaws, boxes, advertisements from BJP were going on road, and they just asked me some addresses. And I did not find. I just on these boxes on auto rickshaw for publicity. There were BJP symbol
and there were photos of Dr. Modi, this size photos, I think more than 5-6 feet height photo on all these boards, on all three sides photos of Dr. Modi, and it was written Modi Sarkar once again. Ek baar aur Modi Sarkar, just like it was written for the it was in Hindi. There was no name of candidate of that constituency. There was nothing as such, and one music was ringing or ongoing music. This what they call it, ghuske marte hain dushman ko, like that. They were just referring to Balakot or some other Pulwama, and like that. Means they were just interested, just vote for Modi. This means is that. This means Dr. Modi, Honorable Prime Minister of this country, he has decided by virtue of being Prime Minister that he is an exclusive candidate for all constituencies of Lok Sabha in this country. Means he is a candidate representing 545 seats. Is this not a cheating point to public? How can Prime Minister of this country mislead public? Why no name of candidate from BJP and photo imprinted and written on that advertisement? Am I going to vote for Modi from my constituency when he does not belong to this constituency as a candidate? He belongs to his candidature in Banaras or Varanasi, not to my constituency. And how can that Prime Minister demand a vote from me when his name does not exist in my constituency? Is it not illegal? Is this not black marketing? Is it not misleading public? How could a person sitting Prime Minister do like this? Is there any answer from BJP or from Dr. Modi, Honorable Prime Minister, why I as a voter is being misled and concealed from information, hidden from information? Why? Who shall tell me name of your candidate? It is your job to tell voter, this is my candidate. You are not telling me, and you are not giving any document about your candidate, what your candidate is. How I know what capability, what curriculum vitae of your candidate is? And this applies to Congress as well, because Congress is also in same boat, sailing same boat. It may be Congress, it may be Aam Party, or it may be any party A to Z, or it may be any candidate. How shall I know? So how you can call this is an election? Is it an election? Voter doesn't know candidates. Candidates don't know voters. And voter is going to vote. Vote to whom? Just on EVM and that's it? Just push your symbol of fool or kamal or symbol of hand or something else. Is it our duty? Means I don't know someone, I'm going to vote for that person, imaginary election, imaginary vote. I am fool as a voter, believe me. There is no meaning left for my vote. Now I am voting and they are saying it's very good election, it's very fair election, level field election. If this is election, then it is stupidity. Stupidity conducted by Election Commission, stupidity conducted by Government of India, and stupidity conducted by society as a whole. I don't bother about those bhakts who are BJP bhakts or who are Congress bhakts, because bhakts never use their mind. Because they don't have minds, they lock their minds just like bhakts in religion. And same thing, bhakts of Modi or bhakts of Rahul or bhakts of some other leader, they have locked their mind and tightened it so well, just like a strong room of bank. What's the meaning of this? We are a sleeping society, because I am saying we are not raising these questions. To whom should we raise this question and who shall answer? When I vote for someone I don't know, and I'm not even asked to know, or I'm not told, shall I stand on EVM for 1 hour and see who candidates are? And even if I know their names, what they are, how I shall know? I shall know them, but just put them, just vote them, and that's all. Like a stupid person, I'll vote and come out. Is this right?
Why when they collect information from candidates, election commission office, they charge fees also? Why this document is not published during electioneering? How shall information reach voter? That is a question. Another question is, this was one part of setback in this election, because these candidates also not interested to invest more money because they know they will not win. Many of those due to EVM issue, electronic voting machine, which has been abused in last election 2014 and which is being abused now as well. Information you may be knowing that there is a missing 19 lakhs or 20 lakhs machines from record, which is horrifying news, horrifying information, formal information issued by manufacturers of EVMs, which are government bodies, which are government companies, and machines received by institution of election commission. There's a gap of 19 lakhs or 20 lakhs of machines from record. Surprising, 19 lakhs or 2 million, you can say 2 million machines have been off record. That is status up to 2014, and after that how many, it's not clear. I'm not blaming BJP or someone else. It is job of election commissioner. Election commission is responsible for electronic voting machines, and they have no record as such. Machines sold and machines received, a gap of 2 million machines exists. Where are these machines? Is this not a question, an authentic question, a weight question? But no one is responding. Election commission, as usual, working as a slave to Dr. Modi. I can even call him an office boy of Dr. Modi, because office boy has got no authority, just to make tea, give water glass, and broom desks and broom your floor. Do we need such election commission? TN session was only one and once, no second TN session. TN session, who was a bullet, who was a cannon, who was a bomb to these politicians. When TN session used to take breakfast, he used to say, I am eating politicians. I am eating politicians in lunch. I eat politicians in breakfast, and I eat politicians at dinner. I kill them in my mind and eat them. And this man is not even a man. This election commissioner is like a bacteria. That's it. He doesn't care for what is happening, doesn't care for anything, and moving. He says elections have been successful, while I as a voter complain that I could not vote because I don't know my candidate. Even I go for nota, how can I know? When I don't know candidates, how can I reject them? So better not to vote. For what I should vote? Tell me. If I don't know my candidates, whom should I vote? What does vote mean then? Why my right has been snatched? This is my constitutional right, and I have been deprived of my constitutional right. And further, if EVM is hackable, let us say it is hackable, somebody is hacking my vote to someone else, now what does vote mean? There are news coming out during election poll. For last 6 phases, we got bulletins from America, from someone who is involved. He is sitting in America and reading all these machines in every day of poll. In last 6 phases, these news were broadcast 3 or 4 times a day. This is status now, and this is status now. If there is technology or attack on technology available to read these machines during polling, then what does it mean? If these are right, let us say on 23rd things will be clear. But if this is right, that person could read these machines during polling, this means these machines are accessible to person. Where is then secrecy? What does secrecy mean?
If this voting status is being read by someone, where is secrecy? That person is telling this is status now, and I will tell you after 2 hours this is now, and he seriously did it. And according to him, the status today is 14th. I think 14th or whatever it is, 14th. And that person has said after 6 phases, it is BJP that is leading 122 out of 485 seats. And all of the seats are going to others. If this situation stands test, and passes it, what shall Election Commission answer? What shall the state answer? What shall Dr. Modi answer? And what shall President of this country answer? And what shall court answer? Is court not responsible to save our rights? Is court not responsible to save constitution of this country? Is President not responsible to protect this country's constitution? Now what they are doing? It's a big question mark. Then where is election? Where is democracy? Where is the right to secrecy? I am being so old. My right is being pulled out. I am a voter for namesake only. I have to go and vote and come out, put on my finger, nail the ink, that's it. My vote is taken by someone else. Now there is a fictitious election. It's selection for sake of election. Better not to conduct elections. What's the meaning of that? If Modi says vote me, bring me back to power, Rahul says vote me and I shall lead this country. Oh, you are not MP ours. You're not our MPs. You have no value at all until your party MPs are won. They won. If they are defeated, what value you have got? If BJP candidates are defeated, what value Dr. Modi got? If same thing happens to Congress, if their candidates are defeated, what value Rahul got? And same applies to each party. Because I have to elect my MP. I have not to elect Dr. Modi as Prime Minister of this country. And I have not to elect Rahul either. I have no right to elect Prime Minister of this country because Constitution doesn't permit that. Then on what basis I should say I have to elect Modi or I have to elect Rahul? This is bloody nonsense talk. I have no right to elect Prime Minister. Then how can I claim that I elected Modi, and how can that Modi say elect me? You are robbing rights of our people. You are Prime Minister, but you are looting us. There is no leader. There is no leader in this country now who can claim, don't elect me. Not even a single leader in this country from single political party or from all political parties who can claim, who can be a statesman to tell, don't elect me, elect candidates for MP. Don't believe in my party. Check my candidate. Examine their CVs. Examine their value. Examine their character. Examine their education. Examine their experience. Examine their track record. And then vote them. Don't vote me. Is there some leader existing? There is democracy. There is no such bold leader in this country of 130 crores people or 133 crores people. Not even a single person of such dynamism exists who can tell people this is right and this is wrong. They are only misleading. Indira never said elect me. Believe me, Indira Gandhi never said elect me. She always said these are the people, elect of them, not me. I'm just telling my policies, what I have vision for this country, what Congress wants to do for you, what we can do this in, but you elect these people. But here, people are out. There is only one and one, either Modi, Rahul or XYZ. So, where is constitution of this country? Put in dustbin, in cold storage, and these people are themselves constitutions. BJP junior leaders, stupid leaders talk stupidity, and same thing applies to other parties. They are
alligating each other's. Congress is saying bad for BJP, BJP is saying bad for Congress, Modi is accusing always Congress family, and he says dynasty rule and this rule and this. These meanings have no meanings. These questions have no meanings. These answers have no meanings. These are all illogical talks. If this family comes from a dynasty, they are not coming because of you. If public elects them, they come. Don't blame dynasty, for you are also having many leaders families who are having dynasty. So dynasty got no meaning on constitution, and these people are not snatching positions. They are contesting elections. They are coming to seats after elections are won. Not without that. If Rahul Gandhi comes because he won one constituency, he came. Same thing, Sonia Gandhi when he came. It is public who has to decide. It's not Modi or Rahul they decide. If public, Rajiv Gandhi, of course, first time he came because of emotional reasons, some other reasons. The second time he had to win, and third time he lost. So it is public who elects. It's not Modi or Rahul. Unfortunately, our public is innocent. Our public is misled. Our public is emotional, sentimental, and these leaders know very well what is meaning of sentimental, what is meaning of being emotional in this country, and they purchase that. They buy that sentimental status, emotional status. They market this very well. Last time in 2014, he just defamed Congress. Just defamed Congress, 2G, 3G, this and that, and 176,000 reasons. All the defamed in such a way that people should believe that was politics of Modi. Otherwise, it's now 5 years and no Congress leader is in jail because of corruption. No one is in jail. 5 years is not adequate for them to put them in jail. This means they falsified everything. Modi and all other leaders in 2014 misled public, emotionalized public, and brought a name to Congress in such a bad state that Congress was considered by people as a chore party or as a criminal party or a scandalous party or a scamsters. And that successful defaming brought Modi to power, and that is also not to his power by self, but there is a possibility, there is some secret behind that. The EVMs were hacked in 2014. That investigation would tell if it happens. But public should understand what I am talking. You have to elect MP. Now elections are over, yet you must know. Maybe next year there's election again, who knows? Nobody knows. We should know when we elect MP, or we elect MLA, or we elect councillor, or we elect panchayat institution bodies members, or whatever we elect. We have not to elect a body, we have to elect a person. We have to. It is our duty to see whether or not that person is electable or not. We have to see that. It's my duty. But see, when I appoint one MP, it's appointment actually. Election is by procedure only. When, as a collective body from my constituency, we all voters collectively go to vote, we declare that we have appointed this person whoever gets more votes, right? And this means that that person appointed by me also, and you too, as because you are member of my constituency. So collectively, we all members of this constituency elected that person as MP, certified by our servant, returning officer, right, and managed by superior servant, that is election commissioner. So means I am appointing this member of parliament to go to Lok Sabha, to work for me, to represent me, to demonstrate my requirements there, to demand my belongings there, what I want, what my future should be, what law should be on my behalf, and that person should tell me what about performance. If not daily, once a week or once a month or once in 2 months, whatever feasible time is there, because there are remote constituencies too. But communication is a must. I must know as a citizen, as a voter, as a person belonging to that constituency, what MP does for me, for that area, for country. But it doesn't happen. I don't find that MP even in debates. There are hardly 50-60 members available in every debate, everywhere you go, except when there is vote of no confidence. You will not find more than 60 MPs sitting in Lok Sabha just to fulfill decorum of what do you call that, minimum number of people should be there. This is called core. Core must be there.
Otherwise, and they keep sleeping. You don't see people participating in debates. If you cannot participate in debate, if you cannot take part in budget, if you cannot take part in arguments, if you cannot do something, if you cannot read bills that come to parliament, if you cannot read constitution, if you cannot do anything, then what for you are going to go this house? I don't know. What for you are going to there? What is your purpose? If you don't know anything, you don't know constitution, this means you don't know what is union territory, what is the union list, what is concurrent list, what is state list. You must know what you don't know. If you don't know what is union list, how can you understand bill is coming, it is right or it's not right? You shall depend upon secretary is executive person, he knows what should come, what should not come, or law ministry should know. No, what for you are there? What's your function? And if Modi says that I don't need MP, I am an uneducated Congress, then remove them. Why you are allowing expenditure for these 545 persons as MPs, which crores of rupees, billions of rupees in 5 years, and pensions throughout life? Why do we need these people? Then amend constitution, then remove all these people, we don't need them. What for they convert? What they are doing? In last 5 years, we have seen faces of Dr. Modi only on TV everywhere, that he is all in all, he doesn't respect others, he doesn't respect even the ministers, forget about MPs, then what function? Then only one Modi is enough, forget one Modi or one Rahul or one someone else, forget all, no need, just use IS officers for your work. And why you should use money, why you spend money for these MPs? This is a question mark, public should ask this. We are not spending money for no use. When I am not getting performance report from my MP, then he is not my MP. I appointed him, but he thinks that now job is over, your job is over, you voted for me, and bye, I will come after 5 years and you vote. This means, are we bound to vote you for every 5 years? Are we born in this earth, in this country for that purpose? I am not born for that purpose. I cannot elect you like this. You are my servant. You are my agent. You are my representative. You are representing me in Lok Sabha. You are representing me everywhere in Bharat. You are working for me because you are working for me and you are getting remuneration for your work. So you have to respond to me. I am your principal. My constituency members are your principal. You have to report to principal. This is your job. You should know what your job description is. Your job description constitutes all what I have said. I am your master. I am your employer. Come to me. You are not coming to me. You are going and touching feet of Prime Minister. Why? Of course, you may be BJP member of Parliament. This doesn't mean that you have to touch Prime Minister's feet. Prime Minister has to respond to you all my problems. You report to me what you did. You may be from BJP, I don't care, you are my representative, you are not Prime Minister's representative. Prime Minister is not your boss. Prime Minister is not legislative body. You are a member of a legislative body. You are not connected to Prime Minister. No. You may be connected to Prime Minister as a member of BJP, that is something else. That is before election. But after election, you have nothing to do with BJP to an extent I am concerned. You are member of Parliament. You are not member of government. You are member of senior government, superior government, which is Lok Sabha. Prime Minister is government, inferior government, reporting to Lok Sabha. Your job is to take report from Minister regarding my problems and tell me. You are not representing Prime Minister. You are not representing any minister. You are not representing Government of India. You are representing me, voter. You don't understand that? And you are member of Parliament, first authority in this country. You forget that you are first authority. You have got power to elect president, means you have to vote for president. You have to power to elect vice president. You have to power to elect member, your speaker of Parliament, Lok Sabha, and your authority to approve Prime Minister as a member of Parliament, Lok Sabha, because Prime Minister means a person who is granted, who wins trust vote or confidence of Lok Sabha House, and there is no definition that majority party is main one. There is no majority party defined in Constitution of Bharat. There is no political party defined in Constitution of Bharat. Only a person who gets confidence, who wins confidence of Lok Sabha is
appointed by President of this country as Prime Minister of this country, located at head of Council of Ministers, and there is no separate chapter for Prime Minister. This Prime Minister is covered only in executive government area, and under President of this country. And you can remain Prime Minister only until that time you win confidence of Lok Sabha, not otherwise. This is simple mathematics, this is simple definition, simple criteria mandated under Constitution of this country, which people don't understand in common. This simple explanation can't be understood by Prime Minister of this country, can't be understood by an opposition leader of this country, can't be understood by political leaders of this country. Unfortunately, it is really. They are working for me, but they are not really working for us. They are not caring for us at all. They are charging monies from candidates they nominate for contesting Lok Sabha elections. They charge crores and crores of rupees every party charge, and then these candidates float themselves in constituency. They spend crores and crores and crores. So a person who contests based on a party spends many crores, say 50, 30, 40, whatever, depending upon size and location of constituency. You think that that MP is your servant or your representative? You think so? It never works. Never works. That person has to take interest return, that person has to take investment returns, that person has to thrive that money multi-positions. If he spends 50 crores, he should like to put another zero after 50 in 5 years to recoup. And this is what is happening. And I generally call this politics as political commerce. This politics, which was a service once, which was defined as a service, real service to society in our constitution, from times when struggle was going on, freedom struggle, this was considered as a very truthful service, very pious service to society, has been converted to high profile political commerce. These parties are getting donations from industrialists, from factory owners, from big businessmen, and they are spending that money in elections and in promotions of their parties and party members and building good offices of their parties, as BJP has done in last 5 years, which Congress could not do in 70 years. BJP did in last 5 years. Biggest office, 8-star, 10-star office, once and everywhere in states of this country, and such a money they got through industrialists. Then how can you think that such party would work for voters? And this donation is also not explicit, it's not transparent, this is opaque. And they say, I am prime servant, Pradhan Sevak. Such type of Sevak you are taking money from party, from businessmen in a hidden way. We don't know how much you have taken from money, how much you have taken from Dalmia, how much you have taken from Adani, how much you have taken from A to Z, and you are saying we belong to Harishchandra clan. You belong to Harishchandra clan? Is it? I think there was no Harishchandra in that case, in this era, in this world. There was no Harishchandra, I think so. If you are Harishchandra clan, you are a mark, you are a representative mark of falsehood, falsifications. Our honorable PM, Dr. Modi, is famous for lies, for using lies, for speaking lies. And other opposition leaders too. Of course, they are a little different, but they speak also same without thinking, without anything. Do we need such types of political leaders in this country, really? Do we? Are we fools? Why don't we get up from bed? Why don't we open our eyes and head? Why are we not serious for this country? Our youth are serious for jobs. They want jobs. They are serious to do work. They are serious. They spend many years searching for jobs. They want government jobs. They want state government jobs. They want this, that. They want to become engineer. They want to become doctor. They want to do everything possible. Why don't they come in working politics to teach lesson to these politicians who are like animals and robbers and looters of this country?
Who can replace these looters? Who can replace these robbers who have been robbing this country for decades? Our freedom struggle laid their lives, they sacrificed their belongings, they sacrificed everything to keep these leaders who are robbers in power. They did that so. All our lakhs of leaders, lakhs of freedom fighters lost their lives to have these robbers run this country. Just think on. I'm not a leader, I'm like you, but my things. Why do you not think to make this country a better one? Why these bhakts depend upon Modi? What Modi did for them, a question comes in. There are about 10 to 20 crores, you can say, Modi bhakts in country now. And these 10 to 20 crores make about 30 crore votes, including their family, friends, or whatever they can. Same thing applies to maybe 5 to 10 crores with Congress. So these people get benefit of vote bank because these are bhakts and they are voters, of course. Same thing, Congress bhakts and their voters, of course. So these people actually have certain background of vote bank. There is only 5 to 15% people other than these bhakts who play important role by voting, by swinging their votes, and that is the reason either BJP wins or Congress wins. Because fixed votes or bhakts don't matter my votes. For example, my sister is BJP Bhakt. I just gave an example. My one sister BJP Bhakt, another sister is BJP Bhakt, one is Congress Bhakt. And like that, every family has got that. It's personal choice. This means they cannot vote to someone else. I have many friends when I was small. Oh, I am from BJP family because we came to Pakistan and we are Jan Sangh and we cannot vote anybody else. Because it's like a religion to us. If they consider BJP as a religion or Jan Sangh as a religion or Congress as a religion, this country is gone to dogs. These political parties, these criminal parties, these companies are religions. Surprising, really surprising. You are born for these religions. BJP is a religion, Congress is a religion. You call this dacoits a religion? Means your gods are dacoits, robbers, liars. Strange. I am voting for my country, not for BJP, not for Congress. I have to be serious about my country's future, my public future, my Bharat future, because whole public is Bharat, whole land is Bharat. I have to think of Bharat, not of these leaders. These leaders are my servants, and I can also lead, but I don't have that much money that these people have. And if I contest, nobody will vote me because they don't know me. But everybody knows Rahul and everybody knows Modi and everybody knew Atal Bihari Vajpayee and everybody knew Indira Gandhi. If film star comes, people know. If cricketer comes, people know. If I come as an engineer, nobody will know me. Who is this? I don't know. What shall I do? People are not open. Dear people, it is your country. It is your Lok Sabha. It is your Rajya Sabha. It is your institution. Supreme Court is yours. Government is yours. Election Commissioner is yours. Parliament is yours. Country is yours. Everything is yours. Your honor. You are above president. Remember it. Don't think you are below president. President is your servant. We people of this country, it is written on preambles. We people of this country do this, and this. This is head of constitution. This means president is also defined in constitution. So president is also under that head. I am head as citizen of this country. We got this country back from English, where English rule was there, and King ruled that, King George V ruled this country, and we got back from King George V this country to keep ourselves as a republic, as a replacement of king, and that is the reason it's called republic. When you replace king by yourself, you are public. It was king and now it is re-king. Re-king means republic. In place of king, we kept republic. It was one person rule, king rule, now it is whole person rule, all person rules. So we as a public member body named king, I am 1 over 132 crore king. You are also 132 crore king, 1 over 132 crore king. This is simple mathematics which you must understand. Do not waste your vote to these robbers, whoever they are.
Check every candidate. Now election is over, no meaning, but elections will keep coming in. Don't forget they are electing your representative. You are not electing prime minister, and you are not electing chief minister, or you are not electing your mayor. You are electing one person, whatever title is that. So you have to deal with that person, and that person has to deal with you in 4 years or 5 years, whatever number of term is applicable. And you have to ask him what he did for you, and you have to tell him, you do it for me. You move application to him, do it for me. It's your job. You cannot say, I cannot do it. If you have a question in law, you raise that question through this person. This is your agent. Raise this question in parliament. It's not a joke. He has to raise this. I have seen people who have certain problems in statute. They want to go to parliament, but you cannot enter parliament. I have written something even to Mahajan, this speaker, long back, many years back. I have written something about our issue. She did not respond at all. Why she did not respond, I don't know. Because I am public and they are above public. I cannot enter Lok Sabha. That is the reason I nominated this. I voted for this person. He has to represent me. And if a speaker is sitting in Lok Sabha, doesn't mean she cannot answer. She was supposed to answer, I am citizen of this country. She never answered me. Unfortunately, this is happening in this country. They are big speakers of Lok Sabha, MP of Lok Sabha. I am dog. Bauji, sir. Thappad dua. I am your boss. You are Prime Minister, but you have to answer me. You are not my master. I am not your slave. I appointed you through MP. You have to respond to my MP's question. You cannot say go. You go. MP would stay there as my representative. You have to answer him my question. Mr. Prime Minister, whosoever be. You are reporting to MP. MP is reporting to you. MP has higher status because I appointed MP. You are not having higher status because you are not legislator as Prime Minister. You are a minister only. You are an executive. You are not legislator. But MP is legislator as a collective body of MP above you, lie above you. You have to report. All ministers have to report to MPs, Lok Sabha. They are my kings. I appointed them. Don't underestimate my MPs because you are under them. Do you understand? We don't want to see situation again. And never think that it's because of you MPs were elected. It was a misconception. You always said because of me MPs were elected. No. MPs were elected by public and not because of you. Unfortunately, you have brought public to that status that they stop thinking about candidates. They think about Modi or Rahul. It is because of you leaders. You, Dr. Modi, and you, Rahul, and you, Mayawati, and you, everybody. You are rubbish leaders. You are dustable leaders. I can dust you out. You are not leaders, you are damagers of this country, you are damager of constitution of this country, you are damager of democracy of this country, and you are damager of structure of this country. Because you are ruining this country. You are polluting minds of voters. You are defecting minds of voters. Voters are intelligent, they understand what democracy is, what vote is. But because they are suffering, they have no time to think of, they have no jobs, they have nothing, no facility, they are here to live, they have to earn their food. And you are having free food. 28 rupees thali you are having, and it is 18 rupees thali before. You have no shame. You are getting free phones, you are getting free cars, you are getting free security, you are getting free medical, you are getting everything free, then you are getting pension, post-retirement. What else you want? You want my head? You want my blood? What do you want? You are not responding to public, you are not working for public, you are working uselessly, ineffectively. And our public is innocent, they are approving you from time to time. They are so emotional in the name of religion because you are rationalizing them. You are talking of Hindus, you are talking of Muslims, and you are talking of country security, and you are talking of everything which has got no relation to election. Military is there and Air Force is there, and they are highly calibered people of this country, and we respect and honor them. They know their job.
Don't tell them. They don't need your guidance. They know their job. General of Army that time refused to Indira Gandhi. I will not accept you at this time what you are saying. You have to give me time. And when I am ready, I will attack Pakistan. She agreed. She did not say no attack now. Because she is politician. She was politician. And that person is expert. She had asked him to start war. She said, no, I am not. It's not correct time. Okay. So when you are ready, start, tell me. That is called adjustment. But you never listen to experts. You never have a confidence in experts. You think you are expert everywhere, and that is your weakness. You are only a politician, nothing else. And remember, Constitution does not define politician. Mind it, don't be in wrong question, and public also listen. There is no definition of politician of Constitution. They are elected members only. MPs, that's it. MPs, MLAs, councillors, panchayat people, they are not politicians. Politicians is a misconception. You are not politician, you are a servant. You are not deciding policy. Policy is decided by House. Policy is decided by collective efforts. You are doing nothing except serving president of this country and serving public of this country and MPs of this country. Yes, you have power to serve people. We were happy when you said that I am Pratham Sevak, Pradhan Sevak. Yes, we liked it. But you prove it. You did not prove it so far. Before entering Parliament building, you just kept your head on the steps. Well, you thought it's a temple or mosque, but you did not prove that. Just only legendary you are. Legendary expression you have. This is not correct. How can you believe it? This is nonsense. Sorry I am criticizing you, but you did that. Indira Gandhi never staged such drama. VP Singh never staged some drama. Atal Bihari Sahab never staged some drama. Guljar Sahab never staged some drama. Devi Gowda never staged some drama. Chandrasekhar never staged some drama. Jawaharlal Nehru Sahab never staged some drama. Only you and only you did all this acting. I will call it acting. That's it. Don't act in public service. Now why politicians are called robbers? Because you have proved. You all are proved. I'm not particularly telling Modi or some. Everybody, all so-called politicians, they are all like that. मेरे भारत के लोगों, मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा हिंदी में बात कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि हिंदी भी जरूरी है बोलनी। चुनाव में देश का हाल बुरा है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। देश जिस तरफ जाना चाहिए था उस तरफ नहीं जा पा रहा, बिल्कुल नहीं जा पा रहा। देश बना नहीं, आजाद हुआ 47 में, आप सबको मालूम है। हालात बहुत बुरे थे उस समय, कुछ भी नहीं था देश में। एक जंगल था जिसमें हमको पौधा उगाना था, खेती करनी थी, पानी पीने के लिए, रोटी खाने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए। पिता हमारे पूर्वज तो कहते थे सुई भी नहीं थी हमारे पास बनाने के लिए। जहाज भूल जाओ, बस भूल जाओ, ट्रेन भूल जाओ। थी अंग्रेजों ने जो बनाई थी बस वो थी। रेलवे बनाया था, कुछ मकान बनाए थे, कुछ शहर बसाए थे, जो भी था उनका दिया उस टाइम था। चले गए वो, रह गए हम। 50 में बना संविधान, 50 तक लॉर्ड माउंटबेटन राज करते थे। ऐसा एग्रीमेंट हुआ था भी लॉर्ड माउंटबेटन गाइड करेंगे, चले गए वो भी। जो भी समस्याएं रही हो देश में रही होंगी, उनको मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ आज 2019 की। हमारे देश में जो चुनाव चल रहा है, बहुत अच्छा चुनाव होना चाहिए था, हर 5 वर्ष में होता है, लेकिन ये चुनाव होता है या मजाक होता है, ये बात अब समझ आ रही है। 1971 से मैं भी थोड़ा समझ रहा हूँ चुनावों को। मैं भी जब यंग था सोचता था ये इंदिरा गांधी क्या कह रही है, और हमारे बुजुर्ग बैठ के बातें करते थे वो क्या कह रहे थे, और वो जिस तरह की राजनीति की बातें करते थे हम भी समझते नहीं थे, लेकिन सुनते थे उनकी बातें, क्योंकि समझ सब कुछ नहीं आती उस उम्र में, जो 16-17 साल की उम्र होती है, 15-16 साल की। सब बात समझ नहीं आ सकती है राजनीति के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें समझ आ जाती थी। हमारी आदत ही हम जाया करते थे सभी की स्पीचें सुनने, क्योंकि उस टाइम ना रेडियो पे इतना आता था, ना टेलीविजन तो था ही नहीं उस समय में, बिजली भी नहीं होती थी, तो जाना पड़ता था। आज उसकी रैली है, कल उसकी रैली है, परसों उसकी रैली है, तो शौक था भाई चलो सुन के आते हैं क्या कहते हैं बातें। चुनाव के बारे में होती थी, पर इस तरह नहीं होती थी जिस तरह आज होती है। आज तो चुनाव ना होके वार हो गई है, लड़ाई का मैदान हो गई है।
आप किसी के बारे में कुछ कह गए तो देख लीजिए वार शुरू हो जाती है, एक शब्द के 36 शब्द आते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे पे गाली देने लगते हैं, परिवारों को बदनाम करने लगते हैं, नेताओं के जो परिवार है उनके अटैक हो जाती हैं, जो नेता इस दुनिया में नहीं है उन पर अटैक हो जाती है। अफसोस की बात तो यह है जो नेता इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में भ्रम लगना शुरू हो जाता है। खास तौर से जैसे बीजेपी के लोग कह देते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, राजीव गांधी के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री साहब तक बोल जाते हैं। देखिए शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री की पोजीशन में बैठे हैं। राजीव गांधी जो दुनिया में नहीं है आज की तारीख में, जो गया इस दुनिया को छोड़ के कई साल पहले, उसके बारे में आज बातें करेंगे वो भ्रष्ट नंबर 1 था। कितनी शर्म की बात है, था तो यार था ना, गए ना वो, अब तो नहीं है ना वो, या तो वो होता सामने तो वो जवाब देता। अब आप ऐसे व्यक्ति के बारे में आप एलिगेशन लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, जो दुनिया में नहीं है, जवाब नहीं दे सकता अपने, अगर आप कह रहे हैं तो उसको अच्छी बात है। आप आदमी के जानवर हैं। मेरा प्रश्न यह है आपसे, क्या भारत की संस्कृति यही सिखाती है? और भारत की नहीं, पूरे विश्व की भी नहीं सिखाती है। जो आदमी चला गया इस दुनिया से वो अपने आप भुगतेगा, भगवान को जवाब देगा, जो ऊपर पूछेगा उससे जवाब देगा। आप क्यों उससे पूछ रहे हैं कि वो ऐसा था या वैसा था? अगर आपके दादा के बारे में कोई ये बात करे तो आपको कैसा लगेगा? आपके पूर्वजों के बारे में कोई ऐसा कि आपके पूर्वज करप्ट थे, चोर थे, डकैत थे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। जो थे वो थे, जो चले गए तो चले गए। शरीर रह जाते हैं, आत्माएं चली जाती हैं, और आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। तो ये बातें एक प्रधानमंत्री के पद में बैठे हुए व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती, कहना कि वो चोर था, डकैत था, इंदिरा गांधी खराब थी, नेहरू खराब था, ये था वो था। या आप जो कहते हैं, कुछ लोग तो आपके लोग कहते थे गोडसे की पूजा करते हैं, जो भारत का महात्मा गांधी को मारने वाला आतंकवादी, बदमाश, गुंडा, अपने को हिंदू कहता है, हिंदू भी बदनाम करता है, उसकी तो आप पूजा करते हैं। आपको शर्म नहीं आती जरा भी? ऐसे आप जो नेता, और आप वही लोग हैं ना आरएसएस वाले, जिसके आप भी सदस्य हैं, रहे हैं, प्रचारक रहे हैं। वो आरएसएस जिसने अंग्रेजों के साथ दोस्ती की लड़ाई के समय, फ्रीडम के समय, आजादी की लड़ाई के समय, जाके इनकी खबरें दिया करते थे कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, गांधी ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है। आपके लोगों को तब भी शर्म नहीं आई, और आज भी आप बड़े चौड़े होकर बोलते हो। अरे आप लोग तो अंग्रेजों के दोस्त रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे हो, पैसे खाते थे आप लोग उनसे, उनके जूते साफ करते थे जाके। आप पता नहीं क्यों करते थे, आप भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आप करते थे। आपको देश से प्यार नहीं था उस समय भी, और आज आप तो देशभक्त बनते हैं। हमने आपको, हम देशभक्त हैं, हमसे सर्टिफिकेट देशभक्त है। अरे क्या भक्ति है? जो देश को आप गुलाम बनाना चाहते थे, तो ऐसे इंसान से क्या उम्मीद की जाए? ये तो भारत की पब्लिक की गलती है कि आपको सीट पे बैठा दिया, पब्लिक समझे नहीं, क्योंकि आज का युवा 18 साल का वोटर, उसे पता ही नहीं कि क्या हुआ पहले। और ये बात तो हमें भी समझ नहीं आई थी कि ये लोग, हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज आपको वोट क्यों नहीं लेते थे। हमको ये बात अब समझ आई है कि आप लोग कौन है। आप लोग ना तो हिंदू कम्युनिटी है, ना आप सनातन हो, ना कुछ हो, आप कुछ भी नहीं हो। आप देशद्रोही हो, उस समय भी देशद्रोही थे, आज भी देशद्रोही हो। साफ कहता हूं, जिसने आरएसएस का साथ दिया उस समय में जब देश मर रहा था, लड़ रहा था, आप अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? हजारों लोग मरे, आपका एक भी नहीं मरा। अफसोस इस बात पे होता है। अब चुनाव चल रहा है 2019 का, आप उम्मीद रखते हैं दोबारा बैठेंगे सीट पे? बैठिए ना, ताकत है तो। आपने 2014 का जो मैनिफेस्टो दिया था, पब्लिक को कहा था हमारा संकल्प पत्र है, आप उसके बारे में एक भी बात नहीं करते। मैंने सारा पढ़ा है। ये आपकी किस्मत अच्छी है डॉक्टर मोदी की, लोग पढ़ नहीं रहे उसको, और आप इतने स्मार्ट हैं कि आपने, जब मैंने पब्लिश किया कि देखिए उनकी साइट पे ये अवेलेबल है, ये मैनिफेस्टो, जाइए और पढ़िए, आपने साइट ही गायब कर दी वहां से। कहते जी हैक हो गई मेरी साइट। तुम्हारी साइट हैक हो सकती है तो बाकी सब हैक हो सकती, ईवीएम हैक नहीं हो सकती? तुम्हारी साइट हैक हो सकती है तो ईवीएम मशीन तो उससे भी छोटी है, वो हैक नहीं हो सकती। जब 5G कहते हैक हो सकता है तो ईवीएम हैक नहीं हो सकती। आप क्यों नहीं बोलते उसके बारे में? क्योंकि आपने इसी ईवीएम से 2014 में चुनाव जीता था, इसलिए आप चुप हैं। और कांग्रेस भी चुप है, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं ईवीएम से फायदा उठाया होगा। पक्की बात है, दोनों एक हो, कोई अंतर नहीं। दोनों सिर्फ वोट चाहते हो किसी भी तरह से। आपने जो फार्मूला बनाया है डॉक्टर मोदी, हिंदू को जीतने का फार्मूला बनाया था, है, आज भी आप बरगला रहे हैं लोगों को हिंदू के नाम पे, देश की सुरक्षा के नाम पे। आप बात नहीं करते थे इन इलेक्शनों में जो चले गए 6 डेज। कभी आपने अर्थशास्त्र की बात नहीं की, कभी आपने नौकरी की बात नहीं की, कभी आपने काले धन की बात नहीं की, कभी आपने किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात नहीं की, कभी आपने ऐसी बात नहीं की हम आने वाले समय में क्या करेंगे, कभी आपने कोई ऐसा प्लान नहीं दिया। आपने जो थोड़ा बहुत प्लान था, प्लानिंग कमीशन का, वो भी समाप्त कर दिया।
और ये कांग्रेस जो अपने को कहती है हमने देश को आजाद कराया है, ये राहुल गांधी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसको बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन ये भी समय खराब कर गया। इधर जा रहा हूँ, रोड शो कर रहा हूँ, हाथ में जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अरे प्लान किधर है? आप पुरानी पार्टी हो, सबसे बड़ी पार्टी हो, आपका हक बनता है, आपका कर्म भी बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि देश को ऐसा डॉक्यूमेंट दीजिए, ऐसा दस्तावेज दीजिए जो हमें बताए आने वाले 5 साल में, अगले 5 साल में, लुक अहेड फिर 5 साल में, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल आप क्या सोचते हैं इस देश के बारे में? क्या हमारा ये जानने का हक नहीं है कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो इस देश की आजादी के लिए जिम्मेदार है, वो क्या सोचती है आने वाले साल में? एक नया जनरेशन है, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ नहीं हैं, आपके पास बहुत बड़ी पढ़े लिखों की टीम है, आप रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करने आते हैं, लोगों को बताते हैं। अरे आप कब बताया आपने कि देश के लिए हम ये करना चाहते हैं? आप हम ये उम्मीद नहीं करते कि खाली बीजेपी की बुराई करें या मोदी की बुराई करें, हम उनकी परवाह नहीं करते, वो तो है गलत, आप तो गलत नहीं है। कांग्रेस को बताना चाहिए था कि हम अगले 50 साल में ये करना चाहते हैं। पब्लिक देखती, पता लगता कि आपके माइंड में क्या कुछ है। पर आप वही बात छोटी छोटी बातों पे आके रुक गए कि हम किसानों को इतना दे देंगे। अच्छी बात है, आप दीजिए, आप मना नहीं कर रहे, लेकिन वो एक हिस्सा हो सकता है आपके प्लान का। आप ये करेंगे वो भी हिस्सा हो सकता है। एक प्राइम कंसेप्ट किधर है कि आप ये देश की जिस तरह से राजीव गांधी लाया था टेलीविजन, सॉरी कंप्यूटर लाया था, इंदिरा गांधी कलर टेलीविजन लाई थी, डिजिटल वर्क आपके उसमें हम मानते हैं उन्होंने बहुत कुछ किया उस समय के हिसाब से। राजीव गांधी ने भी काफी किया जो कर सकता था उस टाइम, इंदिरा गांधी ने भी काफी किया जो कर सकते थे उस टाइम। उन्होंने अपने हिसाब से उस समय के हिसाब से जो कर सकते थे, चलो 100% नहीं सही, 50% सही या 25% सही किया तो सही। आपने क्या किया 5 साल में? आप पावर में नहीं थे इसलिए तो पूछ रहा हूँ, पावर में होते तो हम बात ही नहीं करते, फिर आपको परफॉर्मेंस से बात करते। 5 साल का समय कम नहीं होता है। 5 साल में इंजीनियरिंग की डिग्री भी हो जाती है, मेडिकल की डिग्री भी हो जाती है, लॉ की डिग्री भी हो जाती है, सीए भी हो जाती है। 5 साल कम नहीं होते। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके लिए तो बहुत ज्यादा थे, आपके पास इतनी बड़ी वकीलों की टीम है, एजुकेटेड लोगों की टीम है, आप विधायक प्लान नहीं तैयार कर सके? अगर आप 6 महीने में लगाते तो प्लान तैयार कर सकते थे कि हमारे देश का आज की तारीख में यह हाल है, हम चाहते हैं 25 साल बाद ये हो, 30 साल बाद ये हो, 35 साल बाद ये हो, 40 साल बाद हो। हमें खुशी होती, चाहे होता या नहीं होता, हम जानते तो सही कि आपके माइंड में पिक्चर क्या है देश के बारे में, देश कहाँ खड़ा है और आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं। हम ये हक नहीं रख सकते डॉक्टर मोदी से पूछने का कि मोदी को तो पता ही नहीं कि क्या करना है, वो तो बातों की खाते हैं, सब जानते हैं, अब सब जान चुके हैं कि टॉकेटिव पर्सन है। वो कोऑर्डिनेशन भी नहीं रखते अपनी टॉक में, आज यहाँ बोल रहे हैं कुछ, कल बोल रहे हैं वहां कुछ, परसों बोल रहे हैं वहां कुछ। उन साहब को तो ये नहीं पता मैं यहाँ 1 घंटा यहाँ बोलता हूँ, दूसरे बार 1 घंटा वहां बोलता हूँ, यहाँ की बात भूल जाता हूँ, वहां याद रख लेता हूँ। उनकी बात छोड़ो, हम उनको तो पढ़ा लिखा भी नहीं मानते होंगे, उनके पास एमए की डिग्री बेकार है, छोड़ो उनको। आप तो बाहर से पढ़ के आए हैं, आपके पास बहुत बड़े वकील हैं, डॉक्टर हैं, दूसरे लोग भी पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी लंबी इंग्लिश और हिंदी में आपकी स्पीचें देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आपको तो करना चाहिए था। क्या हम आपके वर्ड्स पे ही जाएं? हम एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट चाहते थे देखना कि हम आपके हिसाब से देश को कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने पढ़े लिखे दूसरे, कितने प्रोफेशनल्स, कितने टेक्नीशियंस, कितने दूसरे लोग, कितने ड्राइवर्स, कितनी लोकोमोटिव, कितनी रेलवे लाइन, कितना क्या क्या चाहिएगा और क्या क्या है। वो एक डिफरेंस, गैप आप कैसे पूरा करेंगे, फंड्स कैसे पैदा करेंगे, प्रोजेक्ट कैसे शुरू करेंगे, इन सारी प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा दस्तावेज आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये प्रश्न उठता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। पब्लिक नहीं कहेगी क्योंकि पब्लिक इन चीजों को नहीं सोचती, पब्लिक सीधी सादी है, वो चाहते यार कर रहे हैं, लीडर पे विश्वास करते हैं वो आपके, पर आपको विश्वास तो रखना पड़ेगा उनके ऊपर कि वो आपके विश्वास को रखें। आप विश्वास तो चाहते हैं लेकिन उनको देना नहीं चाहते कुछ भी, यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप पब्लिक को कुछ देना नहीं चाहते, आप रिस्क लेना नहीं चाहते। एक जो प्रोजेक्ट होता है हमारी इंजीनियरिंग में भी होता है, छोटा या बड़ा, उसकी सारी डिटेल होती है, उसकी प्लानिंग की जाती है, कंसेप्ट किया जाता है, उससे पहले उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है, उससे पहले सर्वे दूसरे होते हैं, फिर एक एक चीज की डिसीजन होते हैं, पॉलिसी डिसीजन होते हैं, टेक्निकल डिसीजन होते हैं, मटेरियल डिसीजन होते हैं, बजटरी फाइनेंसिंग होती है, फिर फाइनेंसिंग होती है, दूसरी बातें होती है, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, फिर एक एक क्वांटिटी निकाली जाती है, उससे पहले डिजाइन होता है, उस क्वांटिटी के बाद सब कुछ तैयार कर टेंडर डॉक्यूमेंट निकाले जाते हैं, सब कुछ होने के बाद किया जाता है। इतना बड़ा प्रोसेस प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है? ये तो भारत देश है भाई, बहुत बड़ी पब्लिक है, इतना सारा कुछ है। एक गल्फ की कंट्री यूनाइटेड अरब अमीरात, वो भी कई साल पहले का प्रोग्राम बना के बैठी है,
किंगडम ऑफ सऊदी अरब भी कई साल पहले अपना आगे का प्लान बना के बैठा है। दूसरी ओमान कंट्री ऐसी छोटी सी कंट्री, वो आगे का सोच रही है कि हम इतने साल में क्या करेंगे, पर भारत नहीं सोच रहा। अजीब बात है, पाकिस्तान भी सोच रहा है, जिसको आप अपना दुश्मन कहते हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान दुश्मन है, कोई दुश्मन किसी का नहीं है, आपके कर्म दुश्मन होते हैं आपके। लेकिन हम नहीं सोच रहे, ये हमारी गलती है। इतना बड़ा देश, लाखों मिलियंस इंजीनियर्स, मिलियंस वकील, लाखों डॉक्टर, नर्सें, फार्मास्यूटिकल्स, लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लाखों कंपनी सेक्रेटरीज, लाखों एमबीएस, फिर कुछ हमारे पास नहीं। क्या हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि नौकरी ढूंढे, खा कर जिंदगी में ऐसे बिता दें? क्यों हम अमेरिका से आगे नहीं निकल सकते? अमेरिका में क्या आसमान से आते हैं आदमी? हम अपना सिस्टम क्यों नहीं बनाते? अमेरिका इसलिए आगे निकला, इंग्लैंड इसलिए आगे निकला कि उनके सिस्टम बनाए। हमारे यहाँ वोट के सिस्टम के अलावा कोई सिस्टम नहीं है। आपका जो पार्लियामेंट सिस्टम, वहां तो जुत बाजारी होती है, आप बात ही नहीं करते एक दूसरे से, दुश्मन हो गए। वो उसको गाली दे रहे, उसको गाली दे रहे, हा 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 हा, शेम 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 शेम। इसके लिए पार्लियामेंट बनी है क्या? मेरा पैसा लगता है, टैक्स पेयर हूं, और आपका भी लगता है जो सुन रहे हो। मुफ्त में नहीं चल रहा सब कुछ। हम जिस एमपी को भेज रहे हैं चुन के, हम एमपी को भेज रहे हैं, लोकसभा के एमपी को, हम प्रधानमंत्री को चुन के नहीं भेज रहे। हमें देखना होगा पहले कि हम किसको भेज रहे हैं। यहाँ तो पता ही नहीं है कैंडिडेट का नाम क्या है, उम्मीदवार का नाम नहीं पता हमको, वो कहाँ रहता है नहीं पता हमको। पोस्टरों पे बीजेपी वालों ने बहुत अच्छा किया, एक ऑटो बना दी, ऑटो रिक्शा, कहीं उनके 3 बॉक्स बना दिए, 3 साइड पर फोटो लगा दी मोदी की, एक बार फिर मोदी सरकार। उस पर ना तो उम्मीदवार की फोटो है, ना उस पर नाम है उम्मीदवार का, और घुस के मारा, बालकोट में मारा। देश की सुरक्षा मोदी के हाथ, सब कुछ है तो मोदी है तो मुमकिन है। इन बातों पे आप वोट चाहते हैं? अरे आर्मी फौज वगैरह तो अपना काम कर रही है, वो करते रहेंगे, वो आपके कहने से तो नहीं कर रही। ठीक है, पॉलिसी बनाना गवर्नमेंट का काम होता है, इसमें क्या आपने कर दिया? आपने आके सरहद पे गोली मारी, आपने बंदूक चलाई, या आपके खानदान के कितने बच्चे फौज में गए बता दो मुझे। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी एमपी जो बनने जा रहे हैं, किसके कितने बच्चे फौज में हैं, कोई बताएगा? दूसरों के कंधे में बंदूक चलाते हो आप और खुद वोट लेते हो। अगर मैं नहीं जानता कि मेरा राजनीतिक उम्मीदवार कौन है, मैं किसको वोट दूं? क्यों मैं बीजेपी को दूं, क्यों मैं कांग्रेस को दूं, क्यों मैं आपको दूं, और क्यों मैं किसी और को दूं? क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं? मैंने जन्म यहाँ इसलिए भारत में लिया है कि मैं आपको 5 साल में वोट देता रहूं। मेरे पिताजी ने कहा था मैं कांग्रेस को लाइक करता हूं, तो कांग्रेस को उनके कहने में दे दूं मैं? मेरे पिताजी गए, उनका माइंड उनके साथ गया, उनकी सोच दूसरी थी, मेरी सोच पढ़े लिखे इंसान की है। मैं जानना चाहता हूं जिसको वोट दे रहा हूं मेरे लायक है कि नहीं है, वो इस देश के लायक है कि नहीं है, वो लोकसभा के लायक है कि नहीं है, वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मैं गधे को वोट नहीं दे सकता, मैं कुत्ते बिल्ली को वोट नहीं दे सकता, मैं एक गंवार आदमी को वोट नहीं दे सकता। कोई भी हो उसमें, मुझे एक अच्छा आदमी भेजना होता है एमपी बना के, तो मैं आपके कहने से क्यों वोट दे दूं? मुझे नहीं पता कौन उम्मीदवार है, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है जिससे मैं देख सकूं मेरा उम्मीदवार कौन है। मेरा फर्ज वोट देने का नहीं बनता। मैं नोटा पे भी नहीं दे सकता क्योंकि उम्मीदवार नहीं जानता, मैं रिजेक्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन है। अरे वहां जाके मैं खड़ा नहीं रह सकता आधा घंटा ईवीएम के सामने कि नाम देखो। नाम देखने से भी क्या होगा जब तक उनकी सीवी मेरे पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि पब्लिक को बताए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये उम्मीदवार है और ये पढ़े लिखे हैं या क्या उनके पास है, ऐसे देखिए, आपको अच्छा लगता है वोट दीजिए, नहीं अच्छा लगता है मत दीजिए, आपकी जैसी इच्छा। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी दुनिया में मस्त है, उसे तो प्रधानमंत्री की चमचागिरी के अलावा, उसे तो जूती साफ करने के अलावा, ऑफिस बॉय बनने के अलावा उसे कोई काम नहीं है। और हमारे देश का कोर्ट अदालत, जिसका ये फर्ज है कि इस देश के अधिकार की रक्षा की जाए, इस देश के संविधान की रक्षा की जाए, वो भी शांत वातावरण में ओम नमः शिवाय कर रहा है, विभूति पहन के तपस्या कर रहा है जंगल में बैठ के। हमारा देश का कानून, हमारे देश का आंख बंद करके बैठने वाला वो बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बैठा है, 8 समाधि लगा बैठा है, बस ठीक है। ये हमारे देश का हाल है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा संविधान, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी है। वोट दे दो, बस वोट दे दो। 18 साल का व्यक्ति 21 साल से
छोटा सा बच्चा जो होता है, पहले 21 साल से ऊपर का वोट होता था, राजीव गांधी की मेहरबानी से 21 साल को उड़ा के 18 साल लाया। अब देखिए जो 18 साल से 21 साल का बच्चा है वो इतना भी मैच्योर नहीं होता कि वो लोकसभा का मतलब समझ जाए। बहुतों को मैंने पूछा, जो MBA भी हैं, दूसरे भी हैं, भाई ये क्या है हमारे देश के बारे में बताइए, उन्हें बेचारों को पता ही नहीं कि संविधान भी कोई चीज होती है, लोकसभा भी कोई चीज होती है। ये पूछते हैं क्या होती है ये, एक तो यहाँ तक पूछे दूसरे MP राज्यसभा के उनका इलेक्शन कैसे होता है। हमारे देश के पढ़े लिखे बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है, बल्कि पहले जो लोग होते थे ना, अनपढ़ लोग, उनको ज्यादा इंटरेस्ट होता था। वो अखबारों से, हिंदी के अखबार से इधर उधर पढ़ लेते थे क्या लिखा है। यहाँ तो पढ़ना भी चाहते क्योंकि ये कंप्यूटर युग है, इंटरनेट का युग है, सब कुछ जानना है। बस बैठे बैठे उस समाज के बारे में पढ़ लेंगे, फिल्मों के बारे में पढ़ लेंगे, क्रिकेट के बारे में वीडियो देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, आपस में चैटिंग कर लेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लिख देगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लिख देगा, पर देश के बारे में जिसको भारत माता चिल्लाते हैं सब, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सारे भारत माता की जय चिल्लाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते भारत माता किसको कहते हैं, भारत कौन है। ये उनसे पूछोगे तो आपको बता नहीं पाएंगे। भारत के नेता तो हिंदुस्तान बोलते हैं, कोई भी नेता कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, किसी का हो या उनके स्पोक्स पर्सन हो, हिंदुस्तान की रट लगा देते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती हिंदुस्तान का नाम लेते हुए। वो ये नहीं जानते कि भारत के संविधान में हिंदुस्तान देश कोई नहीं है, दुनिया के नक्शे पे हिंदुस्तान देश कोई नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की रट तोते की तरह उनके मुंह से नहीं जाती। कितनी बार मैंने राहुल गांधी को लिखा उसके वीडियो के ऊपर कि हिंदुस्तान कहना स्टॉप कर दो, कितनी बार मैंने जर्नलिस्ट को लिखा, टीवी वालों को, हिंदुस्तान कहना बंद कर दो, पर किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। यहाँ तक कि मैंने मोदी को भी लिखा हिंदुस्तान कहना बंद कर दो, पर बेशर्मों को कोई क्या करेगा। जो अपने देश का सही नाम नहीं ले सकते, उनके हाथ में आप देश कैसे दे सकते हो। जो भारत के संविधान का पहला पेज नहीं पढ़ सकते प्रेमबल के बाद, इसमें क्या लिखा है पहले आर्टिकल में, उसके हाथ में आप कैसे देश का हाल दे सकते हो। जो भारत का प्रेमबल नहीं समझते कि भारत की पब्लिक देश है, उसके यहाँ जो हिंदू मुसलमान करके बात करता है प्रधानमंत्री, हिंदू मुसलमान का जो प्रधानमंत्री बात करे वो भारत के संविधान के खिलाफ बात करता है। या कब्रिस्तान बनेगा कि नहीं बनेगा, या शमशान बनेगा कि नहीं बनेगा, हिंदू और मुसलमान की बात जो करता है, उससे बढ़ के बदमाश कोई नहीं सकता प्राइम मिनिस्टर। हमारे संविधान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहीं नहीं लिखा है। हमारा संविधान सेकुलर है। जो हिंदुस्तान की बात करे, जो हिंदू की बात करे, जो मुसलमान की बात करे, वो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। कुछ दिन पहले, कल भी मैं बात कर रहा था किसी से कि मोदी नहीं आने वाला है, तो वो व्यक्ति कहता है अरे मोदी नहीं आएगा तो मुसलमान का राज हो जाएगा। बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुन के, यार तुम कैसी बात करते हो, क्या मोदी चला जाएगा तो मुसलमान का राज आ जाएगा? ये कौन सी बात करते हैं, किस तरह की धज्जियां उल्टी सीधी बात करते हो आप। वो कहता नहीं जी, हमें तो हिंदू को बचाना है, हमें तो हिंदू का राज रखना है। कई लोगों ने ऐसी बात की। वही भक्त हैं जिनके दिमाग बंद है, वही गलत रास्ते में भेजे हुए भक्त। मोदी का डिजाइन कि हिंदू मुसलमान का फ्रिक्शन डालो, समाज में फ्रिक्शन छोड़ो, जाति की बात अलग थी, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। SC ST वो अलग चीज है। लेकिन जहां धर्म की बात आती है कि अगर मोदी चला गया तो हिंदू राज खत्म हो जाएगा, मतलब ये है कि मोदी है तो हिंदू राज है। अरे कैसी बात करते हो आप लोग? आप तो देश के सबसे बड़े गद्दार हो। अगर मोदी कह सकता है इनडायरेक्टली कि अगर मैं हूं तो हिंदू राज है, तो उससे बड़ा तो गद्दार कोई नहीं जो ऐसी बात करे। आपकी वजह से हिंदू राज है क्या? और हिंदू राज है कहां? कौन सा हिंदू राज है? क्या ये राज चल रहा है, ये पार्लियामेंट हिंदू पार्लियामेंट है? ये सुप्रीम कोर्ट का हिंदू सुप्रीम कोर्ट है? राष्ट्रपति का हिंदू राष्ट्रपति है? क्या है बात करते यार? कहां से गधे ने पढ़ाई की आपको? कौन सा टीचर गधा था आपका? आप गधे हो? कैसी बदतमीज प्राइम मिनिस्टर हो आप? पब्लिक को मजाक कर रहे हो। बच्चे को तो जो कहोगे मान लेगा, छोटे बच्चों को तो समझ नहीं आती है। लेकिन मुझे से बात करके देखो आप। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कैसे हिंदू हो गए, राज हिंदू हो गया? आपने शपथ किसकी ली थी? हिंदू राष्ट्र की शपथ ली थी क्या? क्या शपथ ली थी आपने? याद है आपको? और राष्ट्रपति का शपथ लेता है, याद है? सुप्रीम कोर्ट जज का शपथ लेता है, याद है? मोदी जाएगा तो हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाएगा। कैसे लोग हो आप? आपको तो अंदर का देना चाहिए जेल में। यही एंटी नेशनल बात करते हैं आप। फिर कहते हैं चुनाव मैं दोबारा सीट पे बैठूंगा। ऐसे आदमी को सीट पे कोई बिठाएगा? क्या ऐसी बात करता है? तुम्हारे भक्त ऐसी बात करते हैं? अरे तुम सोसाइटी को तोड़ने के लिए आए हो। अगर जो मुसलमान भी इस देश में है ना, वो अमेरिका से नहीं आया, ना ही वो अरब से आया, ना सऊदी अरब से आया है, वो यहीं पैदा हुए, कन्वर्ट हो गए। हर एक का हक होता है। मैं भी हो जाऊंगा तो क्या कर लेंगे आप? मैं पैदा जब हुआ था ना, मैं हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ईसाई था। जब मैं पैदा हुआ था ना, एक शरीर आया था बन के आत्मा के साथ। उसके बाद में फिर मेरे बाप ने मुझे क्या बना दिया, उसका हक था। मेरी माँ ने क्या बना दिया, वो उसका हक था। जब तक मैंने अपना होश नहीं संभाल पाया ना, तब तक उनके हाथ में होता है बच्चा। जितने साल का भी होता है, एडल्ट नहीं होता, तब तक माँ बाप के कस्टडी में बच्चा होता है। इसलिए उनकी बात माननी पड़ती है।
लेकिन जब बच्चा अपने आप सोचने लग जाए, जब वोट का डिसीजन ले सकता है, तो अपने धर्म का भी ले सकता है, अपने फ्यूचर का भी ले सकता है। लड़की लड़के को पसंद करके शादी करती है ना, कानूनी हक देता है ना उसको, और लड़की भी लड़के को पसंद करते हैं, उसमें माँ बाप से तो नहीं पूछते ना, वो खाली आशीर्वाद लेते हैं उनसे। तो धर्म भी इसी तरह से मेरे हक में है, मैं किसी को मानू ना मानू मेरी मर्जी है। आप कौन होते कहने वाले? आप होते कौन है? आपने जय श्री राम का नारा लगाया वादियों में जाके, आपको शर्म नहीं आई? एक राजनीतिक रैली में आप भगवान श्री राम को घसीट रहे हैं, इनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। आप जैसा नीच प्राइम मिनिस्टर हो नहीं सकता। उस अय्यर ने तो आपको नीच कहा था, और मैं बता दूं आप सुपर नीच हो उस हिसाब से। आप देश के बारे में नहीं सोच रहे, धर्म के बारे में सोच रहे हो, आप सिर्फ वोट के बारे में सोच रहे हो। कितनी गलत बात है ये। उठा के डाल देना मुझे जेल में, कोई चिंता नहीं है, लेकिन सच है, मैं बोलूंगा। देश की बात नहीं कर रहे आप भ्रम फैला रहे हैं। कितने भ्रम आपने फैलाए, मैं गिनवाना नहीं चाहता। अरे सीट पे बैठ के आदमी को अच्छा होना चाहिए, दिमाग ठंडा रखना चाहिए। आप पब्लिक के नौकर हैं, आप पब्लिक के बाप नहीं हैं, आप पब्लिक के मालिक नहीं हैं, आप मालिक समझ के बैठे हैं। आपने ही में महक कराई, सब जानते हैं, अब भी आप कर रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन इस बार उल्टा होने वाला है। कहते हैं ना, शेर को सवा शेर कभी मिल ही जाता है, वो वक्त आ गया है। जाइए, टाइम आ गया आपका। पहले आपने ईवीएम हैक करा के सत्ता में आए थे, अब आपको आपकी ही हैक कराई जा रही है। अब आप सत्ता से जाने के लिए हैक हो रही है। मत भूलिए, गलतफहमी मत रहिए। बाप मिलते हैं सब जगह, आपका भी मिला है। और जो आप चाहते थे मैं ही दुनिया में हूं, भूल जाइए, कोई दुनिया में किसी का नहीं होता। रावण नहीं रहा, जो सब उसके बराबर तो कोई क्वालिफाइड भी नहीं था, वो नहीं रहा, चले गए, कोई नहीं रहा दुनिया में। इसलिए 5 साल जो आपको मिले थे ना, उसमें बहुत अच्छे काम कर सकते थे, आपने नहीं किए। बस भाषण 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 भाषण, बाहर के टूर भाषण, बाहर के टूर भाषण। अरे 5 साल में 1 साल भी आप सोचते ना देश के बारे में, तो देश का कल्याण हो गया होता। और यही बात मैं दूसरे से कह रहा हूँ, जो बनेगा प्राइम मिनिस्टर की, टाइम मत वेस्ट करना, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास कागज नहीं है पढ़ने के लिए कि हमारा क्या होगा। एक डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। पढ़ रहे हैं लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, जॉब नहीं है। आप ताली बजा के यूं करते हैं ना स्पीचों में, मैं ताली बजा के कर रहा हूँ, जॉब नहीं है, कहां से लाओगे? क्या जवाब है आपके पास? किसान मर रहा है, आपका क्या? आप तो भर जाके खा लेंगे, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? मर तो बेचारा गरीब रहा है ना, आप फ्री में कर देंगे, कर देंगे ना, ये आपकी आदत है। सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, चाइना चली गई, कहीं कहीं चली गई, आपने फ्री में कर दिया, कोई बात नहीं है, अंबानी का चमचा हूं मैं, है मैं भी क्यों करा करूंगा आपके सामने? आपको आदत है ना ऐसे करने की, शर्म आनी चाहिए। 65-60 साल की उम्र है आपकी, आप चाहते तो देश का कल्याण कर सकते थे और आप इस सीट के भगवान बन जाते, लेकिन आप अपने नाम में रहे मोदी सरकार। संविधान में लिखा है मोदी सरकार होगी? बताइए कहाँ लिखा है संविधान में? कहाँ लिखा है मोदी सरकार? लिखा है कहीं? आप खुद ही कहते हैं मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, मोदी 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 मोदी। अरे ऐसा घूट पिला दिया आपने पागल बच्चों को, जो हर बात पे कोई उसे पसंद करे, मोदी मोदी, जब जवाब नहीं होता मोदी 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 मोदी। यार पागल खाने से आए हो क्या? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लीज आप मोदी मोदी कर रहे हो, क्वेश्चन का जवाब देते नहीं हो। आपसे कोई 2 क्वेश्चन भी करे ना, आंसर नहीं है आपके पास। आपसे पूछा जाता है आपके भक्तों से, भाई बताना 2-3 काम जो मोदी साहब ने किए हैं, बेचारे के पास जवाब नहीं होता। थोड़ी देर बाद मोदी 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 मोदी, ये क्या है? मतलब इतना ब्रेन वॉश कर दिया आपने उन बच्चों का, वो ये भी नहीं जानते कि सब क्या हो रहा है। अरे वो बेचारे सीधे साधे बच्चे हैं, 20-25 साल की उम्र भी नहीं है उनकी, उनको भी आगे जिंदगी बनानी है। आप गलत फहमी डाल देती कि मैं जवाब दे दूंगा आपको, डाल दी थी ना गलत फहमी। और आप ये भी जानते हो 10-12 करोड़ बच्चे हैं, जैसे आप कहते हैं हमारी पार्टी सबसे बड़ी 10 करोड़ की पार्टी है, तो 1-2 वोट घर का भी होगा उनका, तो 20-30 करोड़ के वोट आपको वैसे मिल गए, आप ये सोच के बैठे हैं। ऐसे कांग्रेस वाले हैं, वो भी ऐसे ही, वो भी नहीं सोचते, वहां भी यही है, राहुल 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 राहुल। अरे देश की राजनीति ऐसे चलती है। मैं अपने उम्मीदवार को नहीं जानता, मैं वोट किसको दूं? मेरा मोदी नहीं है, मोदी मेरे एमपी नहीं बन सकता, वो तो अपने बनारस में बन सकता है या अपने वहां अहमदाबाद में बन सकता था। ऐसे राहुल अपने रायबरेली में बनेगा या कौन सा उसका अमेठी में बनेगा, वो कोई मेरे एरिया से तो नहीं बनेगा। तो मैं जब मशीन पे जाऊंगा, उसका तो नाम ही नहीं लिखा, मैं किसको वोट दूंगा?
जब मुझे ये नहीं पता कि मुझे मेरा एमपी कौन बन सकता है, मेरे पास कितने कैंडिडेट्स हैं जिसका अच्छा वोट जा सकता है, मेरा वोट जा सकता है, और आप कह रहे हैं वोट देके आ जाओ। किसको वोट देके आ जाओ? ये इलेक्शन कमीशन जो खाता पीता सोता है, ये कोई लिस्ट जारी नहीं करता है पब्लिक को कि ये कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूशन से, आप इनसे छांट लीजिए, वोट दे दीजिए। क्या इसका फर्ज नहीं है? किस बात के पैसे लेता है ये? फीस किस बात की लेते हो आप चार्ज कीजिए कैंडिडेट से फीस, बोलिए वो अगर नहीं ऐड करते तो आप कीजिए, उनकी पर्चियां दीजिए बना के, ये 10 आदमी है, 20 आदमी है, 3 दिन से छांट लीजिए। आप पर्ची देने आते हैं वोट की भी, ये आपका नंबर है, सीरियल नंबर, जाके वोट दे देना। हम किसको वोट देना ये तो बताते नहीं आप। अरे नाम तो बताओ ना जो खड़े हैं, हम छांटने छांटना होगा। आप जो प्रिज्यूम करते हैं कि हम बीजेपी और कांग्रेस को देंगे, कौन से कानून में लिखा है ये? हम तो मानते नहीं आपकी पार्टी को, संविधान में पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है। हम कांग्रेस को भी नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते। हमने तो चुनाव करना है, एक व्यक्ति का करना है, आप रिप्रेजेंटेटिव करना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होगा करना है। हम तो उसको देखना चाहते हैं। हमें मोदी से कोई मतलब नहीं, हमें राहुल से कोई मतलब नहीं, हमें मायावती से या किसी और से भी कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब तो उस व्यक्ति से जिसको हम चाहेंगे कि ये आदमी सही है, उसको वोट दिया जाए। पर उसका तो कागज ही नहीं आ रहा हमारे पास, किसको वोट देने? आप चाहते कि मैं वोट ना दूं, मतलब तो ही हो गया ना। आप चाहते, आप इनको बताइए ही मत, फिर ये मजबूरी में या तो कांग्रेस को देंगे, उसका भी नाम मत बताओ, बीजेपी का नाम बताओ, तो या तो फूल पे लगा देंगे, या हाथ पे लगा देंगे, या साइकिल पे लगा देंगे, या किसी पे लगा देंगे। आप ये सोच के बैठे ना। जनता चेंज हो चुकी है, पागल नहीं है हम। अगर नोटा पे भी तभी देंगे ना आप कैंडिडेट का पता होगा। हम तो नोटा पे भी नहीं देंगे, हम देंगे ही नहीं, फिर वोट बात ही खत्म हो गई है। और क्या करेंगे? जब सरकार बेवकूफ हो, इलेक्शन कमिश्नर बेवकूफ हो, सारा सिस्टम बेवकूफ हो, तो बेवकूफों को वोट क्यों दिया जाए? इलेक्शन कमीशन को आपने पाला हुआ है, वो तो आपकी जैसे दुम लाता है ना, कुत्ता दुम लाता है अपने। आपने जितनी भी गलतियां इलेक्शन में की सब तो क्लीन चीट उसने दे दी है। आपने कोई गलती की नहीं है, सब तो सत्यवादी हरिश्चंद्र के भी बाप हैं। आपने कोई गलती कर ही नहीं सकते आप। हाँ, राहुल गांधी कर सकता है गलती, वो कर सकता है, मायावती भी गलती कर सकती है, वो सब महामिलावट नहीं है ना आपके हिसाब से। आप ही शुद्ध देसी घी हो, आप ही शुद्ध आटा हो, आप ही सब कुछ शुद्ध हो, क्योंकि आप गंगा से भी शुद्ध हो। गंगा भी शायद मैली हो गई, पर आप मैले नहीं हुए। अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। इतना भी ज्यादा ना खोखलापन ठीक नहीं है। किसी आदमी को इतना गुलाम बना देना, मेरे सामने नहीं बोलना। अरे 11 कंप्लेंट सबके क्लियर देते रहे, कमाल ऐसा हो सकता है क्या? इतना झूठ आप बोलते हैं चुनाव की रैली में, इतनी गलत भाषा आप प्रयोग करते हो, फिर भी क्लीन चिट। साहब, इंसान बनो, इंसान। भगवान बनने से कुछ नहीं होता। और आप रहोगे तो बनोगे ना। वैसे भी आप जा ही रहे हो, आप बुराई भी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बस मुझे दुख इसलिए होता है कि मैं अपना वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया। मैं वोट नहीं दे सका, मुझे पता ही नहीं था किसको वोट देना है। मेरे पास कोई लिस्ट नहीं, कोई आया नहीं वोट मांगने, कोई देख ही नहीं कि मेरे को वोट देना। और बीजेपी कांग्रेस को मैंने देना नहीं था। मैं अगर हेट करता हूँ आज की तारीख में किसी से, तो बीजेपी और कांग्रेस से हेट करता हूँ। ये दोनों एक ही थैली के छट्टे बट्टे हैं। वो भी झूठ बोलता है, वो भी झूठ बोलता है। हाथ मिलाने से, पब्लिक को ऐसे करने से, रोड शो करने से वोट नहीं मिलते। वोट मिलते हैं अपनी कैपेसिटी की वजह से। आप, राहुल गांधी अच्छी स्पीच दे सकता है, अच्छी बात है, क्वेश्चनों के आंसर भी आपसे अच्छे देता है, अच्छी बात है, प्रेस को भी फेस कर लेता है, सब ठीक है। आप नहीं कर सकते, वो भी ठीक है। सवाल इन बातों से तो वोट नहीं मिलते ना। राहुल गांधी फेस कर लेता है, ठीक है, फेस कर लेता है, इंटेलिजेंट कर लेता है। आप झूठ बोलने में इंटेलिजेंट है, वो कर लेते हैं, सबको पता है। मास्टर लॉयर है, लायर है आप दुनिया में, सब जानते हैं। आप झूठ बोलने में मास्टर है, वो आंसर देने में मास्टर, वो इम्प्रोवाइजिंग में आंसर दे देता है। लेकिन ये चीजें काफी नहीं है ना वोट देने के लिए। आप भी कोई डॉक्यूमेंट, आपका तो पिछला ही डॉक्यूमेंट खैर पूरा नहीं हुआ, चाहते तो आप भी पूरा कर सकते थे, आधा तो कर ही सकते थे, पर आपने कोशिश नहीं की। दुख इस बात का होता है, उसमें बहुत सी बातें थी जो आप कर सकते थे। अगर आप थोड़ा बैठते, एक दो मिनिस्टर को उसमें लगा देते, 2-3-4 प्रोफेशनल वहां बिठा देते, तो आपका आधा मैनिफेस्टो कवर हो सकता था। लेकिन आपको ऐसी इच्छा ही नहीं थी। आपने सोचा पब्लिक सब भूल गई, पब्लिक को याद कहाँ, अपना बस जाओ फोटो सेशन करके पब्लिक में रोज सुबह शाम तक टीवी चला दो, मुझे देखते रहो, मेरे दोस्तों को, मेरे भगवान, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मुझे देखते रहो बस, फिर नमो टीवी देखते रहो बस, मुझे देख के वोट दे दो बस। किसी की शक्ल देख के वोट नहीं दिए जाते साहब। वोट काम से दिए जाते हैं, कारनामों से दिए जाते हैं, ऐसे नहीं। काम तो किए नहीं आपने, आप वोट मांग रहे हैं दूसरी बातों पे। आपने पब्लिक को बोला 15 लाख दूंगा, वो बहुत लचीला बात हो चुकी है, इससे मन नहीं करता बात करने का। वही बात अब राहुल गांधी करेगी, मैं 72,000 रुपये साल में दूंगा। वो नहीं जानता कहाँ से पैसे लाएगा, आप तो लाने ही नहीं थे।
हो सकता है वो कुछ दे भी दे, क्योंकि छोटा अमाउंट है, पब्लिक को विन करने के लिए, पब्लिक को ट्रस्ट में लेने के लिए वो कुछ कर भी देगा, लेकिन आपने तो सोचना ही बंद कर दिया। आपने कहा मैं तो कहा ही नहीं, आपने तो बात ही खत्म कर दी। वो तो लिख के दे रहा है, ये फर्क है दोनों में, लेकिन इस बात पे भी वोट नहीं मिलते। फिर वही बात आ जाती है, जो फ्यूचर की बात करेगा, जो देश कैसे चलेगा इस बारे में जानेगा, वोट उसी को मिलेगा। जो कहेगा एमपी कैंडिडेट चुनो, वोट उसी को मिलेगा। जो कहेगा कि मेरे को चुनो, वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हमारे कैंडिडेट नहीं हो। राहुल गांधी भी हमारा कैंडिडेट नहीं है, मायावती या दूसरी वती हमारा कैंडिडेट नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है। हमारे एरिया से जो खड़ा होगा हम तो उसको जानते हैं। एक बेचारा फौजी आया, आपने उसको भी नहीं आने दिया आगे। एक गरीब फौजी बेचारा पुअर आदमी जिसने 18 मेडल जीते, उसको चांस हटा दिया उस गरीब का। बताइए उसने क्या क्राइम किया था? आपने उसको लड़ने से हटा दिया रास्ते से। कितना अच्छा काम किया आपने। ये आप कहते हैं गरीबों को भले, अरे लड़ने देते उसको। आपका बाप का क्या जा रहा था यार? क्या आपका क्या ले रहा था वो? मतलब इतनी बारीकी में चेक करेंगे आप कि इंसान कहाँ जाए, मर जाए, हार्ट अटैक हो जाए उसको। अरे क्या यार, एक इलेक्शन तो लड़ने जा रहा है, कौन सा वो एटम बम बनाने जा रहा है? ये आपकी सिक्योरिटी बाहर कर देगा वो। इतना भी अच्छा नहीं होता फॉर्म भरना, एक लिमिट तक ये सत्ताई ठीक होती है। मतलब हर चीज को आप उसमें लिखवाएंगे ऐसे ऐसे। आप कितना अपनी बीवी की डिग्री, अपनी बीवी की शादी भी नहीं लिखी थी आपने अपने फॉर्म में, जब शुरू में किया था कि मेरी, आपने लिखा ही ना, खाली छोड़ दिया था। अपने डिग्री के बारे में आपने कंफर्मेशन नहीं दिया, तो आपका तो कभी कैंसिल नहीं हुआ। उस बेचारे गरीब का, जिसने आपके सिस्टम के खिलाफ बोला था, उसको निकाल के मक्खी की तरफ बाहर कर दिया दूध में से, जाओ तुम क्वालिफाइड नहीं हो। इतना बेवकूफपना, इतना जबरदस्त विस्फोटक आपके मन में है एक गरीब आदमी के, एक फौजी के खिलाफ। क्या ले रहा था वो आपका, और क्या ले रहा था इलेक्शन कमीशन का? तंग किया उसको इतना। आपके समझते आपका नाम होगा उसमें, आप बदनाम हुए उसमें, आपकी रेपुटेशन खराब हुई उसमें, आपकी भी और इलेक्शन कमिश्नर की भी। और सुप्रीम कोर्ट देखो, हम नहीं सुनते, जाओ वहां भी यही, वो आपका असर वहां भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कभी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देता था, लेकिन आज नहीं दे रहा। ये हो रहा है आपकी वजह से। डरते हैं आपसे लोग, सब डरते हैं कि कहीं मोदी हमें लोया ना बना दे। तो मेरे दोस्तों, ये जो बात मैं कर रहा हूं, हालांकि इस बात का प्रैक्टिकल मीनिंग अब नहीं रहा, चुनाव तो हो चुका है, अब तो नाम मात्र का एक फेज रह गया, जिसमें भी अब इतना होने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है कि अब यदि डॉक्टर मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कोई बचा सकता है इस सीट में, तो कोई चमत्कार या भगवान की कोई ऐसी शक्ति बचा सकती है जो अपने आप सारे ईवीएम को चेंज कर दे, या जितने ईवीएम पहुंचे हुए हैं सिक्योरिटी रूम में या स्ट्रॉन्ग रूम में, वो सारे के सारे रिप्लेस किए जाएं। नहीं तो 20% से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं डॉक्टर मोदी को, 20 या ज्यादा से ज्यादा 25%। 125 से लेके 130, 35, मैक्सिमम 140 या 50 तक एनडीए को मिल जाए तो एनडीए बहुत किस्मत वाला समझे अपने आप को। अब किसको बाकी मिलेंगे मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मतलब ये है कि हमारे साहब जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि अब ये वापस नहीं आ पाएंगे। इनके अपने ही लोग इनके विरोध में है अंदर से। इनके 70% लोग बीजेपी वाले के नहीं चाहते कि मोदी पीएम बने, वो नहीं चाहते अंदर से, क्योंकि सारे अंदर से दबे हुए हैं, सबके हथौड़ा मार मार के दबाया गया है, उनकी जबानें बंद की गई हैं, उनकी सोचने की शक्ति बंद की गई।